After coefficient of determination, in this video from illustration 16 to 21 will be covered to find out the solution. Obviously solution आपके textbook में भी आपको दिखेगा, but here I will show you with explanation. So first I took the question in my book that if the regression line of y on x is y cap is equal to 12 minus 15x and the mean of x is 6, find the mean of y. नाउ यहाँ पे आपको रिग्रेशन लाइन पहले ही दे दिया है और वैल्यू ऑफ एक्स भी दे दिया है, तो जस्ट यू हैव टू टेक द रिग्रेशन लाइन 12 माइनस 1.5 एक्स की वैल्यू भी आपको दे दी गई है, तो जस्ट गेट इट मल्टीप्लाई 12 माइनस 1.5 इंटू 6 दैट इज 9 एंड 12 माइनस 9 here we get the y cap 3. When you get the y cap 3 is equal to your y will be 3. Next is if the regression line of y on x is y cap is equal to 11.5 plus 0.65x and y bar is 18, find x. Now for this the same solution y cap is equal to y, तो यहाँ पे हम y bar की value will be shown in your y cap that is 18. I again write down this equation. Y cap will be taken as in 18 1.5 plus 0.65. The value of x has to be find out. Now out of this 18 minus 11.5 is equal to 0.65x. Get them minus, you will get 6.5 is equal to 0.65x. Then 6.5 0.65 से divide कर दो, that would be the value of x, and here we find the x value is 10. Therefore the x bar जो क्वेश्चन में पूछा है, जो आपकी x value है that is equal to your x bar is 10. Next is illustration number 17. If x bar 5 and y bar 11 and b 1.2 obtain regression line of y on x. Regression line का फॉर्मूला है y cap is equal to a plus bx, where we have the value of b we have, but we don't have the value of a. And first we'll find out the form, we'll keep the formula of a, that is y bar minus b x bar, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है. y bar that is 11, b 1.2 and x bar is 5. So 11 minus 1.5 into 5 it is 6, and 11 minus 6 the answer of a is 5. Now we can keep the value of a in the formula of y cap, that is 5 plus b is 1.2. And the second question in illustration 17, if x bar is 60, y bar is 75 and sx square is to covariance xy is 5:3. Obtain regression line of y on x and estimate y for x is equal to 65 from it. So first take the information which is given in the question, x bar value, y bar value and the x square, the sx square and covariance xy is 2. अगर ये is 2 है मतलब sx square upon covariance xy, तो इसका value 5 and the covariance value is 3. Now make it opposite. Out of this information here they ask you to find out regression line y on x. ये सारी इंफॉर्मेशन देख के एक ही फॉर्मूला दिखता है जो सॉल्व हो सकेगा टू फाइंड आउट द b. रिमेंबर ये आपको स्मॉल फार्मूला में के लिस्ट में दिया गया है, कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर. So that is the same which has been found 3/5. The calculation of 3/5 you will get 0.6. Then we'll find out the value of a, that is y bar minus bx bar. The value of y bar which is already given in the question is 75. b जो अभी हमने ढूंढा that is 0.6. x bar that is 60. 75 minus 0.6 multiplied by 60 you will get 36, and here we find the value of a 39. Now we'll find out the regression line, that is y cap is equal to a plus bx. a 39, b which we have found is 0.6. The value of x is given in the question 65.
So 39 plus 0.6 is equal to 65. 39 plus 0.6 multiplied by 65, you will get 39. So here the value of regression line is 78. Next, illustration 18, which is given on your page number 144, and such question asked for the 1 marks. The fitted regression line y on x is y cap is equal to 50 plus 3.5x if the observation is 16 and 108. In the question it is given 16 and 108. जब observation इस तरह से दिया जाए तो 16 x का वैल्यू है और 108 y का. Remember this is used in fitting of the line. Find the error is estimated y for x is equal to 16. So out of this, first we'll take the regression line y cap 50 plus 3.5x, and out of this observation obviously we get the value of x is 16. So here we just have to take the regression line and in that keep the value of x, that is 16. 50 plus 3.5 into 16, 56, and here we get y cap 106. Now another thing here, it has been asked to find the error. To find out the error is equal to y minus y cap. The value of y we'll find out from the observation 108, and the value of y cap just now we found, that is 106. Get them minus, you will get the error is 2. The same illustration, one more question is there, that if one observation 10 and 30, again observation 10 and 30 दिया है तो 10 x की वैल्यू होगी और 30 y की, is used in the fitting of the line y cap is equal to 22 plus 0.8 x. Find the error is estimated y for x is equal to 10. What can you reduce from the value of the error? So first of all, take the regression line which is given in the question. 22 plus 0.8, the value of x, that is 10. 22 plus 0.8 into 10 will be 8, plus of this will be 30. So here we get the value of y cap 30. Again in the question asks error to be find out, that is y minus y cap. Y की value observation में से ले लो 30, and the y cap just now we found 30 means 0. Means out of this there is no error. Next is illustration number 19. Here you can see the page number is also written. If the regression line of y on x is y cap 25 plus 3x and covariance x and y is 48. Find standard deviation of x. Also find coefficient of determination if standard deviation of y is 15. So here when you can see the information covariance xy is given, and even they are asking to find standard deviation of x as well as the coefficient of determination. तो सबसे पहले standard deviation और covariance ये formula साथ में यहाँ in this way, this formula you can find out in the page which I shown you. Hope you have already removed the printout of that page. तो ये रहा आपका फॉर्मूला जहाँ पे कोवेरियंस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और स्टैंडर्ड डिविएशन की भी. हियर विल राइट डाउन फर्स्ट, एज यू कैन सी द वाई कैप. कैन यू सी द वाई कैप? रिमेंबर a प्लस बी एक्स, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला ऑफ वाई कैप. मतलब ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू 3 है, तो 3 विल बी b कोवेरियंस एक्स वाई विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 48. So here the information, so here I keep the value b covariance, that is 48, and sx square, that is the variance. So keep the sx square over here near to the equal to, and 48 divided by 3. Sx square here we found 16. Now the 16 sx square मतलब variance. Question में पूछा है ढूंढने के लिए standard deviation, and if we remove divide this sx to the, if we find out the root of 16, it is 4. So here we found the value of standard deviation of x, and out of this now they asked to find out coefficient of determination. The formula for this will be the same of the coefficient, correlation coefficient, that is
sx into sy and the whole square. Covariance xy which is given in the question is 48. Just now we found standard deviation 4 and standard deviation of y which is given in the question is 15. 48 divided by 4 multiplied by 15 is 60. It is 0.8 and square of this you will get 0.64. Second question of illustration number 9. For the regression line y cap is equal to 25.3x. How many units should be increased in the value of x to increase the approx 15 unit in y? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर बार हमको हर एक क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x दिया जाता था, पर यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ y दिया गया है और रिग्रेशन लाइन द सेम विच वी हैव सॉल्व इन द फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ही फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रिग्रेशन लाइन आई टुक फ्रॉम देयर एंड हियर इज द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट टू इंक्रीज द अप्रॉक्स 15 यूनिट इन y. अब यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है a प्लस 3x, a इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू विच हैज़ बीन नेवर चेंज, तो इसको कट करके y कैप की वैल्यू रह गई 3x, जहाँ पे y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 15. 3x डिवाइड बाई 3, जस्ट टेक द 3 डाउन, here we'll find out the x value is 5 unit. So here we got the answer that the x should be. इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक बैक अगेन टू शो यू द एक्सप्लेनेशन. जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि x की वैल्यू क्या होगी और या तो फिर y की वैल्यू क्या होगी और रिग्रेशन लाइन आपको दिया जाएगा. रिग्रेशन लाइन में y कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स, राइट. a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 3 है. b का वैल्यू जितना भी दिया होगा दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय y, मतलब कि अगर x ऑलवेज रिमेन 1 तो y विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगा. जितनी आपकी b की वैल्यू दी होगी उतना टाइम y बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता 25 प्लस 5x, तो x रिमेन 1 तो y विल बी इंक्रीज बाय 5 टाइम्स. इन द सेम वे अगर x की वैल्यू होगी 2 तो y विल बी 5 टाइम्स मोर देन x. y 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे a इज 25 एंड b इज 5. b इज इक्वल टू y. b जितना नंबर होगा उतना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ. x अगर 2 है तो 5 टाइम्स 2 विल बी 10. वैसे ही अगर y की वैल्यू आपको दी गई हो 25, तो 25 डिवाइड बाय 5 तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5. This kind of question is going to come maximum time for the 1 marks. So be sure what has to be go. Next, illustration 20 which is given on your page number 146. If the regression line is y cap is equal to x upon 2 plus 5 and sy sx is 5:8, find coefficient of determination. Now to find the coefficient of determination, here exactly we are going to find out r square, that is coefficient of determination. But first we'll take the equation, that is y cap is equal to x upon 2 plus 5. अब जब इस तरह से इक्वेशन दिया हो, आपको अगर फॉर्मूला याद हो y कैप का, तो इट इज a प्लस बी एक्स. नाउ एज यू कैन सी x अपॉन 2 पहले दिया है एंड देन प्लस 5 इज गिवन. तो x अपॉन 2 को अब डायरेक्टली a मत डिक्लेयर कर देना, जिस x जहाँ पे होता है दैट इज योर bx. तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 5 एंड bx इज योर x अपॉन 2, और वी कैन से इट इज 1 अपॉन 2 x. नाउ दिस इज व्हाट द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड यूज. b इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय sy अपॉन sx. नाउ हियर 1 upon 2, the value of b which we have just now found, that is 1 upon 2, r as it is, that's what we are going to find out in the question. Sy upon sx, that's the ratio which is given in the question, the way it has to be kept. अगर आपको रेशियो की तरह दिया है तो इस तरह से आपको रखना है, that is sy upon sx is equal to 5 upon 8, the way I have written here. So that would be 5 upon 8. Now out of this
1 upon 2 will be remain as it is, and if we take this number over this side, it would be 8 upon 5 is equal to r. If we remove the calculation out of it, 0.8 will be the value of r, but the question is asking about the coefficient of determination. So r का square कर दो, you will get the value of 0.8 multiplied by 0.8, you will get 0.64. So that's how you have to find out coefficient of determination. Next question in the illustration number 20. The regression line y on x 4x plus 5y minus 65 is equal to 0. Find the value of regression coefficient b. Now out of this equation we have to find out b. First let me show you. The regression line of y on x is y cap is equal to a plus bx, and the equation which is given is 4x plus 5y minus 65 is equal to 0. Now to turn this equation into this, first take 5y is equal to, अगर is equal to के ये साइड नंबर लेकर जाए तो माइनस साइन टर्न हो जाएगा प्लस में, एंड द 4x विच इज़ प्लस वो इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा तो ये टर्न हो जाएगा इन द साइन ऑफ माइनस. एंड कैन यू सी द इक्वेशन टर्न इनटू y कैप फॉर्मूला. जिसके साथ x नहीं है वो a रहेगा और द नंबर विच इज विथ x विल बी bx. Then out of this equation first we have to solve. Don't directly declare that b is 4. यहाँ पे हमको equation solve करना. Then y will be as it is and 5 will go down, that is 65 minus 4x upon 5. Now this has to be go as an equation like LCM upon 5 minus 4x upon 5. 65 divided by 5 will get 13 minus 4 divided by 5 you will get 0.8x. So that's what the equation come of regression line y cap is equal to 13 minus 0.8x. For illustration 21, as you can see the equation is totally different what we were doing for so long. Now in this question, in each and every question they are asking to find out BVU. You can see the BVU has to be find out in each and every question. Now for this formula has to be introduced to find out BVU is equal to BYX multiplied by CX upon CY. In the same way, if the question is asking BYX is equal to, the equation will be BVU into CY upon CX. Remember this formula and also write down this formula in your formula page for the solution of this question. So out of this, as per the formula, let's find out BVU, and the formula will be BYX multiplied by CX upon CY. इस फॉर्मूला को याद करने के लिए हमेशा याद रखना कि अगर VU पूछा है तो YX मल्टीप्लाई बाई CX अपॉन CY रहेगा, और अगर क्वेश्चन में BYX पूछा है तो आपको BVU यहाँ पे रखना है, CY ऊपर CX नीचे. रिमेंबर दिस इक्वेशन, अदरवाइज अगर कुछ भी यहाँ पे आपने इक्वेशन रॉन्ग कर दिया फॉर्मूला तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा. सो BYX इज इक्वल टू 0.85 multiply the CX divided by CY. Now here if you remember the formula, U का formula क्या है, U is equal to X minus A divided by CX, और V का formula है Y minus B divided by CY. आपको U का इक्वेशन दिया है x minus 15 यानी कि A होगा और नीचे CX होगा जिसका वैल्यू आपको नहीं दिया है, तो मतलब it would be 1. In the same way V y minus 20 मतलब 20 is your B, and upon CY जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया है तो here we'll assume it as a 1 upon 1. So here we found BVU is equal to 0.85. In the same way we'll find out the next. Again here they asked to find out BVU. Formula will be BYX multiplied by CX divided by CY. In this formula all the information is given, that is 0.9 multiplied by CX, that is U के नीचे वाला number will be your CX and V के नीचे वाला CY. So it would be 3 upon 5. 0.9 into 0.6 and 0.9 multiplied by 0.6, the answer will be 0.54. Next, third question.
If u is equal to 10, x minus 45 and v is equal to y minus 50 upon 10 and byx is equal to 0.25, and here they ask you again bvu and the formula is byx multiplied by cx upon cy. Now as per this equation we can say कि नीचे वाला नंबर आपका cx होगा, that would be 1 and here cy 10. बट रिमेंबर अगर आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिया है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है u का, x माइनस ए अपॉन सी एक्स. x माइनस ए यानी कि ये आपका अज्यूम मीन है और x भी आपको दिया है, सी एक्स नहीं दिया है तो हमने अज्यूम कर दिया 1. But the 10, when it is given something like this, it would be cx will be 1 upon 10. Remember this. अगर एक भी नंबर यहाँ पे दिया है, ये फॉर्मूला से अलग से यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर को आपको नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है. That would be your cx. So if you divide 1 divided by 10, you will get 0.1. So now here byx that is given in the question 0.25 multiplied by cx that is 0.1 and cy that is 10. 0.25 into will be 0.01 and if you get it multiply 0.0025 will be your VVU. Next, the last one where the u and v is given and byx is given, again they ask you BVU and the formula is byx into cx divided by cy. Now here again there is no cx is given and even here cy is not given. So here cx will assume it 1. So cx is equal to 1 upon 5. That is 0.2 and for cy it will be 1 divided by 2 that is 0.5. Now we'll keep the value 1.6 into cx is equal to 0.2 and cy that is 0.5. 1.6 into 0.4 and 1.6 multiplied by 0.4 you will get 0.64. We complete all the illustration given in the book. Now we'll start with the exercise 3.